जान बचाने के लिए इस चक्कर में सिर्फ लोग हमारे जो बर्मा के मुस्लिम हैं वो इधर उधर हो गए थे, क्योंकि वो ये हालात आज जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। एक परिवार में मतलब 4 लोग था, 4 लोग इकट्ठा करके नहीं ले जाता है, या तो उसी घर में एक उठाता है या तो उसका मन करेगा तो 2 उठाता है। हमारे वहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ 2012 से। इससे पहले भी काफ़ी हुआ लेकिन कम था, मशहूर नहीं था। उसके बाद हम जैसे तैसे देश छोड़ दिया। उसके बाद कुछ ना कुछ करके यहाँ तक पहुँचा। यहाँ पर 2021 में एक वेरिफिकेशन हुआ। उस वेरिफिकेशन के दौरान 200 से ज़्यादा लोगों को हीरानगर में ले गए। हम लोग जब से आया हूँ तब से किसी का मम्मी ले जाता है, या तो किसी का बच्चा ले जाता है, या तो किसी का भाई ले जाता है, या तो किसी का बहन ले जाता है। हमारे बच्चे वगैरह साथ में नहीं होगा तो फिर हम लोग इधर किसके लिए जीना है, किसके लिए रहना है इधर। हम लोग जो 30,000 का फ्रेश वगैरह लाया था वो बेच रहा हूँ 7,000 में, 8,000 में, मतलब जितना मिलता है उतना ही दे देता हूँ। कूलर लाया था 10,000 का कूलर 2,000 में बेच देता हूँ। क्यों? अगर वो कम से कम 2,000 रुपये निकलेगा तो हमारे खर्चा होगा, जाने का खर्चा वगैरह निकल जाएगी। फिर हम लोग ऐसे सोचते कि सामान वगैरह जुग्गी वगैरह सारा तोड़ के बेच दे रहा हूँ। Once you're registered with UNHCR, there is an obligation even under of the UN agencies to protect these people. Yet we found that recently the Indian government has deported a woman who was detained, illegally detained in Jammu, and was then separated from her family and sent across to Myanmar. Not only is this outrageous because it violates India's own international obligations, it is also outrageous because this is a woman who's been separated from her wife, from her husband and children, and been placed alone at risk of the kind of harm that they sought to flee, which was rape, arson, killings, and many other such serious international crimes. The law against refulma, the principle of non-refulma is that any state cannot return an individual to a place of risk that they have escaped. So under that, India already has the obligations. Only way that I can see that the government can possibly detain people is because their documents were not all right. But what we do know is, for instance, again, Hasina Begum, the mother of 3 who was recently deported, she is recognized by the UN. If the police are misbehaving, if the authorities are misbehaving and illegally detaining
the Rohingya refugees or separating them from their families, or in fact deporting them, then in all of these, it is the state that has to stay. The instructions have to go from state. So the Jammu police are wrong to detain these people. It becomes politically useful for any politician, including those in India, to talk about irregular immigrants as a way to try and overcome the challenges of governance. And in the mixing up of Bangladeshi economic migrants, unfortunately, and very irresponsibly, Indian politicians have also started thrusting the Rohingya into that group, even suggesting things like they are involved in terrorism. जहां भी ये लोग हैं वहां ये कैंसर की तरह सोसाइटी को, समाज को खत्म कर रहे हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये रोहिंग्या, ये अपराध बढ़ा रहे हैं। चैन स्नैचिंग, लूट, हत्या, बच्चों का अपहरण, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा है। मेरे मायसे में जेल में है। 6 मार्च 2021 को ले गए थे, जब वेरीफाई करने के लिए आए थे वहाँ पर। अभी जो छोटी बहन है वो 7 साल की है। जब माँ को ले गए ना, उस दिन मतलब 2-4 दिन उसने खाना ही नहीं खाया, दिन रात रोती रहती है। मतलब अपने देश छोड़ के आए, पर हम इस समय इलीगल बोलते हैं, इस इलीगल बोल के ले गए। अब लोगों के बीच में एक डर आ गया है, खर्चा तो है नहीं जाने का, तो सोच रहे हैं कि कारोबार में जो भी है, कबाड़ चबाड़ जो भी है बेचकर थोड़ा खर्चा लेते हैं और चले जाते हैं। यही जिस डर से हम अपने देश को छोड़ दिए हैं, उसी डर से हम यहाँ कैसे रह सकते हैं।